Good morning, students. Today we will read geography. In geography, the first chapter, our environment. In this chapter, we will read what is environment and how many types of environment. There are broadly two types: the natural and human environment. And natural environment that again divided, biotic and abiotic. Biotic, the living beings, and abiotic, the non-living beings. The domains of the earth or the rims of the earth, the lithosphere, hydrosphere, biosphere, like that. And the importance of the domains of the earth, the lithosphere, the earth, and the atmosphere, the air, and hydrosphere, the water. So such and such things which we will study today. Let's start. What is environment? What is environment? The term environment means the surroundings or living conditions of all forms of life on earth. Surroundings. Or the living conditions. Living conditions of all forms of life. All forms of life. Mind that. It is broadly classified into natural environment and human environment. So environment is broadly divided into two parts: the natural environment and human environment. The natural environment. What is natural environment? The natural environment comprises of all living and non-living things that occur naturally on earth. It is the interaction and interrelation between human beings and all the other living forms. Interaction or interrelations between the humans and the other forms of life. The other creatures. Natural environment may be biotic or abiotic, or natural environment biotic or abiotic भी हो सकता है. That means the natural environment can be divided into two types: biotic or abiotic. Biotic. What is biotic? Biotic or biological components. Biotic or biological components, or abiotic or physical components. Mind that. Biotic, biological components, abiotic, physical components. Biotic or biological components consist of all living things like plants, animals, human beings. All these living creatures together form a part of the biosphere. Next, abiotic or the physical components consist of non-living things like land. Land, lithosphere, water, hydrosphere, and air, atmosphere. Under abiotic, you will study the three things: lithosphere, land, hydrosphere, water, and biosphere, air. The physical components. And उधर बायोटिक में biological components. The biotic and the abiotic environments together are also called the domains or the realms of the earth. Either domains or realms, चाहे domains बोलो या फिर realms बोलो. ठीक है? तो there are 4 domains or realms of the earth. क्या? Lithosphere, hydrosphere, atmosphere और biosphere. Lithosphere, land, hydrosphere, water, बायोस्फीयर, एयर, तीनों को मिला करके फिर जो बनता है दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड. बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड. द लिथोस्फीयर, द सॉलिड portion of the earth. The hydrosphere, all water bodies on the earth. And atmosphere, the air blanket around us. That's clear, no problem. These are called the 4 realms or domains of the earth. Now
We will discuss one by one. Okay, lithosphere, hydrosphere, biosphere. Okay, lithosphere. What is lithosphere? The solid outermost layer of the earth is called the lithosphere. Okay, the solid outermost. Okay, outermost layer of the earth, outer, the upper layer. Okay, it consists of rocks, minerals, and a thin layer of soil. It is about 100 किलोमीटर थिक ना. इसकी थिकनेस कितनी है लिथोस्फीयर की? 100 किलोमीटर. ओके. इट्स सरफेस इज इरेगुलर, और इसका सरफेस कैसा है? नॉट रेगुलर. ओके. इज मेड अप ऑफ द वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड वैलीज. इस लिथोस्फीयर को, इस लैंड पे, हमारे अर्थ पे क्या है? कहीं ऊंचा है, सच एज माउंटेन, एंड द प्लेन्स है ना, जो नदर्न गैंगटिक प्लेन जिस पर हम रहते हैं, ठीक है. एंड दैट इज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलस. Okay, that is very much fertile. Okay, that's why the plain is so populous, so much densile. Why? Due to the fertility of the soil. Okay, and valleys and plateaus where the minerals found. Okay, like that. तो अनइवन है ना, अनइवन. ओके, अनइवन है, इरेगुलर है. द थिन अपरमोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर विच इज अबाउट 35 किलोमीटर इन थिकनेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. तो क्रस्ट किसको बोलते हैं? ये 35 किलोमीटर. ओके, इसकी थिकनेस कितनी है? 35 किलोमीटर ना. The layer below the crust is called the mantle. The below of course, there is also a layer under the crust, and that layer is known as mantle. Okay. The lithosphere is of great importance to us. अब हम देखेंगे कि इसका importance क्या है. Why the lithosphere is useful to us, for human beings. है ना. इससे हमको क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या फायदा होता है, कैसे, हाउ द ह्यूमन बींग्स लाभान्वित होते हैं, है ना, इस लिथोस्फीयर से. इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, है ना. क्या देता है? फॉरेस्ट देता है. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स, एंड लैंड ऑन विच वी लिव एंड बिल्ड आवर होम्स. इसी लिथोस्फीयर पर सारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, एंड वी डू ना ऑन दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड द लैंड और द लिथोस्फीयर. ओके. वी आल्सो गेट मेनी यूजफुल मिनरल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, आयरन ओर एंड ऑयल फ्रॉम द लिथोस्फीयर. और सारा मिनरल्स भी हम इसी से प्राप्त करते हैं. That's why this is very much useful to human beings in a many ways. So many importance. Okay. Next, the domains of the earth, that is the hydrosphere. You know, the 3/4 part of the earth is covered with water. Okay. 71% water and 29% land as a whole earth. You know. Hydrosphere, that the water bodies, the water. Okay. The earth is called the blue planet. हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. Why? Due to that. Okay. That covers water. 3/4 part of the earth is covered with water. So it looks like blue. Okay. Due to the presence of abundance of water. That's clear. A large portion of it is covered with water. The hydrosphere, or the sphere of water, as the name suggests, comprises of all forms of water. Okay. Water may be in many forms, either solid, liquid, or gas. Solid, ice, liquid, water, and gas, the water vapor. You know, you also study that in science. Okay.
the three forms of water. Okay, the three states. Okay, three states of water like that. Oceans, seas, rivers, lakes, snow, ice, glaciers and water vapor together form the hydrosphere. इस hydrosphere में any form of water, okay, that may be either solid, liquid or gas. Gas, the water vapor, the liquid, water, चाहे वो छोटा से छोटा वाटर बॉडी हो या बड़ा से बड़ा हो, ओके, लेक हो, वेल्स हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, and solid, the ice, snow, like that. All the such things that included in हाइड्रोस्फीयर. ओके, अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे. जैसा आपने लिथोस्फीयर का इम्पोर्टेंस देखा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर. द इस पानी का वाटर how that is precious to us, to whom? For humans. Okay, the hydrosphere is very important because it supports life in many ways. Without water, the life can sustain. No. So the water is needed. Water is needed for survival of the life. Okay, water is needed. We can't exist without water. That's why. It is used for drinking, washing, cleaning, etc. Okay. So such and such purpose the water is needed. Next use देखते हैं. It helps in generating electricity and the power. Okay. पानी से बिजली भी पैदा होता है ना. The hydroelectricity, The next is also used for the industrial purposes. Okay. Industrial purposes. Without water, industry cannot run. That is run. No. That cannot run. Like production, manufacturing and cooling. Okay. The next importance of water, that is the farmers use water for various agriculture practices, for irrigation purposes. Okay. Without water, crops can grow. No. That's why water is needed for growing crops. Water navigation helps in trade and commerce. बिजनेस और व्यापार, एक देश से दूसरे देश में जो वासनिक जो ट्रेडिंग होता है और कॉमर्स होता है थ्रू द वाटर शिप, and ocean provides us with food and minerals. And lastly, the water bodies moderate the climate of a place. Okay, water bodies moderate of a place. किसी भी जगह के क्लाइमेट को मॉडरेट करने में वाटर हेल्प करता है. दैट्स वाई द सच एंड सच इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. ओके, द नेक्स्ट डोमेन्स जो है वो क्या है? एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? A thin layer of air envelops the earth. The thin layer, okay, the thin layer of air envelops the earth. This layer of air is called the atmosphere. It is held close to the earth by the force of gravity. The gravitational force, धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए इस एयर को क्या रखता है? क्लोज करके रखता है. The atmosphere contains many gases. Okay, so many gases. You also read in science about gas. Okay, so many gases like oxygen to breathe. Okay, what we inhale? Oxygen. Without oxygen, human beings can survive. No, so oxygen is needed for survival of the life. Okay, nitrogen and carbon dioxide. It also contains dust and water vapor. नाइट्रोजन, अब इसका कंपोनेंट देखते हैं ना, कितना परसेंट नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है ना, दैट इज द 78%, एंड 21% ऑक्सीजन, एंड रिमेनिंग गैसेस 1%, सच एज
hydrogen, carbon dioxide, carbon, helium and other gases. Like that. अब इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे किसका, एटमॉस्फेयर का, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. The atmosphere is an important domain of the earth. The oxygen present in the atmosphere helps living beings survive, and carbon dioxide is used by plants to make their food. As you know, carbon dioxide is helpful for making food for the plants. Without carbon dioxide, plant cannot make their own food. Okay, हम में और प्लांट में अंतर है. हम डिपेंड हैं ना, लेकिन प्लांट्स क्या करता है, प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, वो अपना फूड खुद बनाता है. दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, यू नो. तो उसमें एयर, वाटर एंड सनलाइट विथ हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यू नो, लाइक दैट. तो water is needed, air is needed to make food for the plants. The atmosphere blocks the harmful rays of the sun from reaching the earth's surface. Okay, तो जो सन से जो हार्मफुल रेज आता है, that is called the ultraviolet rays. Then this there is a layer that is called the ozone layer that protect us. Okay, that layer that is known as the ozone layer that protect us from the ultraviolet rays. Okay, तो वो जो हानिकारक होता है सन रेज ना, तो उसको वहाँ वो रोकता है ना. देयर इज अ होल, दैट इज अनदर मैटर, बट वो हेल्प करता है उसको, अल्ट्रावायलेट रेज को से हमें बचाता है. It controls climatic condition and changing seasons. Okay, so such and such importance of the atmosphere that we discuss. The next, that is the biosphere. What is biosphere? A narrow zone. Okay, a narrow zone on Earth where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet. Okay, ये तीनों मिलते हैं. कौन कौन? Lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet is called the biosphere. That is the narrow zone. Okay, narrow zone. It is also called the living world and consists of the plant and animal kingdom. इसे हम living world भी कहते हैं. इसमें plant kingdom और animal kingdom. Okay, plant kingdom and animal kingdom. That means all the living beings. And as you know, the plant is also living. Okay, all the creatures. Okay, it is the zone where all living beings interact with each other to support life on earth. और हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, अंतरक्रिया होती है ना, इंटरडिपेंडेंस होती है. That is needed. Okay, that is called the living world and the biosphere. Biosphere consists of living beings ranging from microscopic organism. Okay, see that micro, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव इसमें आता है, और बड़ा से बड़ा living beings भी आता है. Okay, giant trees such as the banyan, okay, the elephant, the whales and the microscopic organism. Okay, microscopic organism to huge trees, animals and humans, all are included in biosphere. That's clear. This great variety of life on earth is called biodiversity. Okay, biodiversity, diversity but biodiversity. Okay, that is called the biodiversity. The two major elements of the biosphere are producer and consumers. Producers and consumer. प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर. तो हम प्रोड्यूसर हैं या कंज्यूमर्स हैं? ह्यूमन बीइंग्स. अच्छा, कंज्यूमर हम कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस तो करते नहीं है. ओके, प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स की बात करेंगे. ये सारी चीजें आपको साइंस में भी पढ़ना है, या आप द जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा. ठीक है. They are capable of producing food from the environment. Most plants are autotrophs. Most plants are
ऑटोट्रॉफ, इसलिए कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। दैट्स वाई दैट इज प्रोड्यूसर नॉट कंज्यूमर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स नॉट heterotrophs. But the human beings, that is consumers and not autotrophs but heterotrophs. That's clear. Consumers are also called heterotrophs. Consumers are also called heterotrophs. They cannot produce their food directly from the environment, and all animals are heterotrophs. All animals are heterotrophs. ठीक है, इसलिए हम डिपेंड हैं ना, हम डिपेंड हैं, हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। दैट्स वाई वी आर कंसिडर्ड एज द हेटेरोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके, वो अपना खुद भोजन बनाते हैं। बट वी आर consumer not producer, that's why the humans are heterotrophs. okay, अब इकोसिस्टम की बात करेंगे। ये क्या होता है इकोसिस्टम? द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके, ये बायोस्फीयर दो किंगडम में विभाजित है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यू नो These two kingdoms are interdependent, अंतर्निर्भर है, both of the, okay, interdependent. Plants हम पे निर्भर है, हम उस पर निर्भर है, okay. Plant kingdom और animal kingdom both are interdependent, अंतर्निर्भर, okay, interdependent, and are also depend on the physical environment for survival. How to survive? For survival, we are interdependent. Okay, for survival. Okay, we can't survive alone. Okay, so that's why there is interdependence between both. Okay, the animal kingdom and plant kingdom. That's clear. The biosphere is made up of separate zones in which each zone has its own physical environment and plant and animal life. This is called an ecosystem. This is called ecosystem. That's clear. What is ecosystem? What is biosphere? What is a hydrosphere? Okay. What is biodiversity? Okay. अब हम देखेंगे द ह्यूमन इन्वायरमेंट। शुरू में बताया था कि इन्वायरमेंट ब्रॉडली इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू, द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट हमने देखा। अब देखिए ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग क्रिएटेड बाय मैन लाइक रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस। ना, इट आल्सो रेफर्स टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। द रैपिड डेवलपमेंट, ओके, आज तो बेतहासा विकास का ये भूत सवार है सब जगह। The rapid development led to change in the natural environment. Okay, इस प्राकृतिक पर्यावरण में there is a change and caused a lot of environmental issue. ना, environmental आज issue बना हुआ है, जो हम बेतहासा उस प्राकृतिक पर्यावरण में चेंज कर रहे हैं for the growth or the development, है ना। How to progress, how to develop the human beings, change in the interfere in the human the natural environment. Okay, तो आज एक वो इशू बना हुआ है। Which of the issue? Environmental issue. Why? There is a problem there, है ना। आज environment में problem create हुआ है। The change are taking place so rapidly that nature is not able to repair the damage. Okay, उस जो नेचर में जो इजली रिपेयर नहीं, जो भी क्षति हमने मानव ने पहुंचाया है उस प्रकृति में, उसको इजली भरपाई नहीं की जा सकती। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, यू नो, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। देख रहे हो कितनी गर्मी में, असमय बारिश, है ना,
like that global warming and extinction of a large number of plants, animals, and birds, and pollution of air and water. No, air pollution, water pollution, like that, the such and such problems that is created in the natural environment. Some of the consequences of technological advancement. Okay, ये क्यों हो रहा है? Due to the technological development, technological advancement, and consequent harm done to the environment. Okay, to save our environments, efforts have to be made to maintain a healthy balance. Okay, तो क्या होना चाहिए? एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए ना. तो ये जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है, ओ, तो हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस इन इकोलॉजी, देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, टू मेंटेन द बैलेंस, ओके, balance between human environment and nature, there is a issue today. Okay, यही आज इतना ही भर. That's all. Thank you.